साथ संगत जी, ऐसा हुआ कि यहाँ संगत लंदन में इतनी ज़्यादा बढ़ नहीं रही थी, तो दास ने बाबा हरदेव सिंह जी महाराज से प्रार्थना की कि मेरे पास ज्ञानी जी को आप भेज दें। तो ज्ञानी जी वॉज वेरी प्रोमिनेंट इन आवर एरिया, इन फरीदकोट इलाका, ऑल दैट एरिया, एंड देयर वाज लॉट ऑफ डिमांड फॉर हिम। तो बाबा जी ने कहा कि वो अगर इधर आएंगे तो वहाँ गांव-गांव में जो जाते हैं वो कौन जाएगा। तो मैंने कहा सच्चे पातशाह यहाँ यूरोप में उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। और फिर बाबा जी ने मेरी विनती को प्रवान किया और उन्होंने जाते ज्ञानी जी से जब बात की तो ज्ञानी जी यूज्ड टू वर्क इन पंजाब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एज ए ऑडिटर, और उन्होंने ज्ञानी जी ने भी एक बार नहीं सोचा कि मेरी पेंशन का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। वो सारे के सारी पेंशन वगैरह सब छोड़कर रिज़ाइन करके वो इमीडिएटली यहाँ इंग्लैंड आ गए। और ये मेरा सौभाग्य है कि इससे पहले फिर ज्ञानी जी एक 74 में टूर बना था, बाबा गुरबचन जी के साथ भी आए। तो तब भी बाबा गुरबचन सिंह जी को मैंने प्रार्थना करके, ग्रुप तो चला गया, बाबा तो चले गए थे, ज्ञानी जी को वापस यहाँ इंग्लैंड में और समय के लिए रख लिया था। वो फिर और 2 महीने मेरे पास रहे थे और इतना सक्सेसफुल उनका अपना जीवन, क्योंकि जो भी वो बोलते थे उस पर पहले अमल करते थे और फिर बोलते थे। और यही कारण है कि आज 10 साल बीत जाने के बाद भी इंग्लैंड का बच्चा बच्चा उनकी प्रति वही श्रद्धा रखता है और आज भी उनको वैसे याद करता है। My feeling about Giani ji, from what I hear from people, is that we go around life not coming across enough people who say such great things, not just pleasant but great things about someone. And from what I see about Giani ji, the way that people talk or feel about Giani ji, people go out of the way to say the greatest things about him. For a saint to be so admired by Sangat at large, not just in the UK but everywhere, he must be a great saint and must have touched many souls. Sangaji, like there are too many things you can talk about Giani ji. There's so many memories. I remember personally when Sanchit was born, Babaji was here with Babaji's blessing. Like Sanchit was born in lap of Giani ji, like he was around, and so Babaji named Sanchit like Sanchit, and Giani ji was sitting outside in the Gyan room. As soon we came out of the Gyan room, Giani ji said like, Babaji ne ki na ditta? Sanchit. And Giani ji smiled and he said like Sanchit means Sant Chit. So he's like the saint with a like heart of a saint. And it was such a blessing at that moment and we felt so good. I think there's many small things. Like I think what I learned from Giani ji is the positivity. He could. It was one morning, about 5 o'clock in the morning, it must have been early, and there was a phone call, which we used to get a lot of in London Bubban. And it was a saint from abroad, from the US, and he wanted to speak to Giani desperately, straight away. So I happened to just be very close by, so I actually knocked on Giani's door 5 o'clock in the morning and handed over the phone to him, explaining who it was. And this person, this Mapush on the other side from the US, was actually always shouting abuse down the phone, saying, Giani, I hate you, I really hate you, I really hate you. And you could hear the sound in that Mapush's voice. It was very quite hurtful and quite extreme. And Giani just smiled and he goes, but I love you, but I love you. And he said that about 3-4 times, and suddenly, on the other side of the phone, where there was extreme sort of thoughts coming through, there was calm, there was patience, and also there was an apology saying, Giani, I'm so sorry, I apologise, I love you too. And that's when the conversation then started. And that was amazing to hear. Somebody who's shouting abuse at you, you stay calm and you fill them with love. And that's what Giani was. He was just
embodiment of love, and anything that was extreme or negative, once they actually came together towards Giani, it would end up being a positive vibe, a positive energy, which ended up being love. And that's one of the main things I remember of spending time with Giani. Saints, I was blessed to have Giani from Reverend Giani. I was very young at the time, but one very fond memory is that one word we always used to hear from him, Khushiyan. ज्ञानी जी की एक जो हमें बहुत पुरानी याद आ रही है, नए शहर की बात है, नया शहर पंजाब में, इंडिया में। ज्ञानी जी उस वक्त यहाँ नहीं आए थे, और एक मुझे याद है कि ज्ञानी जी को हम लोगों ने बेनती की, ज्ञानी जी आप यहाँ संगत हो रही, आप ज़रूर दर्शन देना। सासंग तो उस वक्त की बात मैं कर रहा हूँ जिस वक्त ज्ञानी जी एक बिजली के महकमे में काम किया करते थे, और वो अपनी ड्यूटी वहाँ भी देते थे और संगत में भी अच्छी तरह से ड्यूटी निभाते थे। और ज्ञानी जी को जब ये बेनती की कि यहाँ संगत है और आपने आना, सासंग कितना उस वक्त पंजाब में एक तरह से बहुत हालात ख़राब थे। जब ज्ञानी जी ने उस वक्त कहा कि देखने की सासंग, उस वक्त बात थी कि ज्ञानी जी ने कितना हमें वो उत्साह दिया और संगत पे आए। और जब यहाँ आए तो महापुरुषों ने पूछा, यहाँ लंदन की बात है, महापुरुषों ने पूछा ज्ञानी जी आप इतने बड़े भवन में अकेले होते हो, आपको कैसे लगता है? ज्ञानी जी ने कहा बेटा हम अकेले कहाँ होते, जब भी देखो हमारे साथ निरंकार होता है। 2000 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰਿੱਕੀ, ਰੋਬਰਟ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਸਨ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੱਡੀ ਵੈਨ ਲੈ ਕੇ ਉਮਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਈ ਰੋਡ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। तो रात ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕਾਂਗੇ ਲੰਡਨ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੋਂ ਸਵੇਰੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਡਨ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਬਰਾਂਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਰਾਂਡਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪੌਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਅਦਲਾ ਬਦਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸਨ ਆ ਕੇ, ਪੈਸੇਜ ਜੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਤਰ ਕੇ ਕਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਲਾਈਫ किस तरह की समूथ ते किस तरह की परोपकारी है, क्योंकि इकट्ठे रहे सा काफ़ी देर। कह लगे विशेष जी ये बारिशां ते आउंदियां जांदियां रहणगियां, हवावां आउंदियां जांदियां रहणगियां, पर तुसीं तां अज आए हो साडे कोल। I remember once I said to Giani ji, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹਾਂ। Where am I going wrong? Am I not asking for something, or should I be asking for something? And he goes, ਕੁੜੇ ਸਦੈਣ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਮਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ, have a blank mind, ਨਿਰੰਕਾਰ will give you flowers. Instead ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪੱਥਰ ਮੰਗਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਫੁੱਲ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ ਹੈ। That's you go to do namaskar with a pure empty mind, and leave the rest to Nankar. And saints, I will never forget that, never. Giani ji had a huge impact on my life. I was able to spend some premium time with him during my stay at London.
and since that time London, the Aryan region has become very close to my heart because of Giani ji's impact upon my life personally. And one thing I'd like to share about one of the many teachings that he gave to me was that when you go before the Satguru, always keep your head bowed. Giani ji often said to me, Ricky, hamesha Guru samne jaake aap neevi paake rakhni. Never ever raise your head. Always your spirit and your head should always remain bowed before the Satguru. I remember when once there was a big congregation in London Bhavan, and at the end of it, all the Mahapurush that came from outside, they were having langar, and it was almost coming to an end, and but there was still a few who was like in conversation. And then what happened was the local Mahapurush, we thought, right, we'll queue up and we'll start to have langar. And Giani ji came up to us and he said to all the local Mahapurush that until not all the Mahapurush, all the ones who have come from other towns, until they've not all left the premises, only then should the Sevadal think of taking or having langar. And he was so disciplined, and that really hit me because I felt, wow, you know, I didn't even think that. And there's so many great examples, but there was another one, a small one, when he said that when you come in the kitchen and there's lots of cups and dishes left there, some look at it and say, why didn't the person wash up after themselves? And he says, a saint always goes in and looks, what a great opportunity this is for seva for me. So that's just a couple of experiences I learned in Giani ji's great presence. Giani ji had a charm about him. Whoever went into the bhavan, he always greeted with love and came out to greet them and filled them up with a lot of inspiration. He was an inspiring character. The reason that he was inspiring, because he had made his business to follow the teachings of Satguru Baba Hardev Singh Ji. He always made sure he practiced what a Gursikh should do, and he was a model Gursikh. दास अपने आप को बड़ा खुश नसीब समझता है कि ऐसा अवसर जब दास को ज्ञानी जी का संग प्राप्त हुआ। उस वक्त नौजवान महात्मा, चाहे हमारे गुरप्रीत भाटिया जी, टोनी जी, जॉर्ज जी, जगताज जग्गा जी ऑक्सफोर्ड, राजा जी स्पेन, कई महात्मा वहाँ रहते थे, सेवा करते थे। दास को याद है, एक रात 11 बजे रात को एक महात्मा और उनके बहन जी आए साथ। जब वो आए तो ज्ञानी दास सोया हुआ था। ज्ञानी जी दास के पास आए, कहते कि बच्चे उठ। मैं उठा, मैंने कहा हाँ जी ज्ञानी जी हुक्म। हंस के कहते हैं, कहते महापुरुष आए हैं, पुत्र सेवा करनी, तू आटा गुंद ते आटा गुंदन तो बाद तू ते मैं रोटियां बनावांगे। दास ने याद है कि जब आटा गूंदा तब तक ज्ञानी जी तैयार होके नीचे आए। जब आए फटाफट आप उन्होंने गैस जलाई। उसके बाद दास आटा पेड़ा करके देता था, वो फटाफट साथ साथ उसको रोटी का रूप दे के तवे पे डाल के आप उन्होंने खाना बनाया। दास को अब तक याद है। और कई बार ऐसा देखा उस वक्त, अब तो लंदन भवन में जब आओ बड़ी रौनक होती है, बट उस टाइम ऐसा समा था जब काफ़ी कम दिन में कम लोग आया करते थे। तो दास ने एक दिन देखा ज्ञानी जी सिर्फ और सिर्फ दूध गर्म करके और ब्रेड 4 के 5 दिन पुरानी ब्रेड, उसमें उर्ली भी लगी हुई थी, वो डुबो के खा रहे थे। मैंने कहा ज्ञानी जी ये क्या, ये तो ब्रेड भी ठीक नहीं। कहते पुत्र गुरु दा लंगर है, जो मिल जाए शुक्र करना चाहिए। ऐसा उनका जीवन था।